Bhatti and everybody, we are live on the Facebook. So please start the proceedings. नमस्कार एवरीवन। महामहेश्वर अभिनव गुप्त जी की जयंती के उपलक्ष्य पर एक सप्ताह की वार्ता श्रृंखला के चतुर्थ दिवस पर यहाँ उपस्थित गुणीजनों एवं आचार्य अभिनव गुप्त जी के सभी प्रेमियों की तरफ से मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। अब मैं सुनन्या जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो अनम्यूट करें और भैरव स्तोत्र का उच्चारण करें। व्याप्त चराचर भाव विशेषम चिन्मयमेकमनन्तमनादिं भैरवनाथ मनाथ शरण्यं त्वन्मय चित्ततया हृदि वन्दे। तन्मयमेतदशेषमिदानीं भाति मम त्वदनुग्रहशक्त्या त्वं च महेश सदैव ममात्मा स्वात्ममयं मम तेन समस्तम्। अन्तकमां प्रतिमादृशमेनां क्रोधकरालतमां विनिः शङ्करसेवन चिन्तनधीरो भीषण भैरव शक्तिमयोऽस्मि। व्याप्त चराचर भाव विशेषं चिन्मयमेकमनन्तमनादिं भैरवनाथ मनाथ शरण्यं तन्मय चित्ततया हृदि वन्दे। शङ्कर सत्यमिदं व्रतदाना स्नानतपो भवतापविदारी तावक शास्त्र परामृतचिन्ता स्यन्दति चेतसि निवृत्तिधारम्। नृत्यति गायति हृष्यति गाढं संविधियं मम भैरवनाथ त्वां प्रियमाप्य सुदर्शनमेकं दुर्लभमन्यजने समयज्ञम्। व्याप्त चराचर भाव विशेषं चिन्मयमेकमनन्तमनादिं भैरवनाथ मनाथ शरण्यं त्वन्मय चित्ततया हृदि वन्दे। Thank you so much, Sunanya ji. When we encounter a great mind, we are struck with wonder. When we follow him, we admire. But coming closer, we feel as if transformed, as if we are molded in his greatness. Acharya Abhinav Gupta ji was such a great person. The above statement is literally applicable to him. Abhinav Gupta, which endeared him to people from Kashmir to Kanyakumari, he is rightfully described as the Shankaracharya of Kashmir Shaivism. He was an exponent of Trika philosophy, theory of art and literature, poetics, and nature of sound. He was the greatest jewel of ancient India, who glorified Kashmir immensely. He was not simply a tantric sadhu, but the blending of the refinements and wisdom which Indian mind had achieved through centuries. To know deeply about Mahamaheshwara Acharya ji, influence on temple architecture,
of India, I would like to invite a prominent and great personality to grace the occasion with their thoughts. Dr. Ramachandran Nagaswamiji. Nagaswamiji is an Indian historian, archaeologist, and epigraphist who is known for his work on temple inscriptions and art history of Tamil Nadu. He served as a director of the Tamil Nadu Archaeology Department. Nagaswamiji has made archaeology a very popular subject in Tamil Nadu, especially among children through publication of pocketbook guides. He also popularized monuments by bringing out popular guides in the form of newspaper. He was also responsible for involving several thousand school and college students in cleaning and preserving nearby historical places and monuments. He had protected several historic monuments. Nagaswamiji has been awarded the Padma Bhushan Award in the year 2018. डॉक्टर नागास्वामी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है Sir, shall we start sharing the screen? Yeah, please start the Yes, please. Okay. Let me tell the audience that Nagaswamiji is the living legend. In these in the early 90s, he's still so agile, so vibrant with energy, enthusiasm, and that's why he is here today. Despite his ill health, he consented to be the part of the celebrations. So I request everybody to be the part of today's session, because such living legends are very rare to be listened to. So my naman to Acharya Nagaswamiji and everybody who are here, please listen carefully, because these are the rare talks which happen once in a millennium. Sir, are you able to see the screen? Yes. Yes, Madam. Yes, please. Namaskar. I am thankful for the opportunity given to me to participate in this Jayanti celebration, to pay our tribute to Abhinav Gupta, the greatest scholar of India. I am a great admirer of Abhinav Gupta, and it's a great privilege I am presenting myself. I am sure others who have spoken might have spoken about the contribution of Abhinav Gupta to philosophy and Kashmir Saivism. So I have chosen the subject of Abhinav Gupta's contribution to art appreciation. I'll be showing you some slides and also the view of Abhinav Gupta. Yeah, I have to tell you that. Next. I would like to begin my talk with one of the most fascinating poems cited by Abhinav Gupta in Bharata's Natya Shastra. It's a wonderful poem. It conceals the whole supreme as the article of the universe. Look at this poem. Kalpapaya nisanta sandhya samaye sadvyomarange ganaha samprapta pratata angahara valana vaichitriya chitrikritam. Beautiful. At the end of the ayan, in the evening, in the Akasa, Vyomaranga, which itself is the theater,
Sadvyomarange Ganaha. Samprapta Pratata Angahara. Angahara are the dance karana. Dance karana, 2, 3, 4, 5 clubbed together, they make Angaharas. Angahara Valana Vaichitri Chitri Kritam. Beautified. Chitri Kritam. Akase. Savapushyake. The Supreme, his body itself is Akasa. Akasa Sariram Brahma is the Veda. So, Akase. So, Apushyake Vividham Srishtim. Different Srishtis. Sada Sutrayenne. Not occasionally, always. The Supreme is creating all his srishtis continuously, unbroken. Vividam srishtim sada sutrayen. Trailokya tapatihi tvameva bhagavan. Hey Bhagavan, tvameva trailokya tapatihi. You are the universal artist. Artist to the three worlds. Trailokya tapatihi. Tvameva Bhagavan. You yourself are the material cause and you yourself are the product. Vishwakriti Jrimbachi. Flower into the whole universe. You create, you yourself are the material and you yourself flower into this great universe. And so he says, Supreme is Trailokya Tapatihi. He is the universal artist, artist of the three world. Then there is another poem which is known as the beginning of Saundarya Lagari. Sivat Satyayukto Yadi Bhavati Sakta Prabhavitam Nate Evam Devaha Nakhalu Kusalaha Spanditumapi. If Shiva is not united, he will not be able to even move. Nachedevam Devaha. If he is not united with the goddess, Nakhalu Kusalaha Spanditumapi. Even a slight movement is not possible for Shiva. So it is a combination of Shiva Shakti Melana, Sammelana. Ataha Tvam Aradhyam Harihara Grinchadibhi api Pranantum Stotum Va Katham Makarta Punya Prabhavati. How can I sing your glory, greatness, when even Hari, Hara and Brahma are not able to sing thy greatness? Atatvam Aradhyam. This is addressed to Goddess Devi. And we know the Kashmir Sagasam always mentions about the Shiva Shakti Sammelana. Now I come to one of the greatest contribution of Abhinav Gupta in its commentary on Dvanyaloka, which is very, very important for appreciation of art in India, sculptures, paintings, temples. So the first poem of Anandavardhana, who wrote this Dvanyaloka, he says, Kavyasya Atma Dhvanihi. The soul of poetry, soul of art is Dhani. Itiha Samamnata Purva. It's not myself. I am not telling you that, but that early scholars have already said that Dhani is the life spirit
of Kavya. What is Kavya? Kavaniyam Kavyam. That which is beautiful to see and also to listen. But some people say, Tasya abhavam jagatuhu apare. Others say it doesn't exist. There's no such a thing as dhvani. Bhaktamahustamanye. Anye. Others, they call it the mode of expression. You have bhakta, bhakti. Bhakti is where the primary mode of expression is not comfortable. So you reject it and go to the another meaning, which is called bhaktam. Apare bhaktamahustamanye. Kechit vacham sthitam avishe. Some people say this cannot be explained in words. Kechit vacham sthitam avishe tattamutu tadiyam. Tena bruma. So we are explaining it as Sahridaya Mana Pritaye Tat Swarupam. We are describing the Lakshana of Dhvani for the satisfaction of Sahridaya Mana Pritaye, for the pleasure of Sahridaya, spectator. So the basic concept of art appreciation is dhvani. That is essential for appreciating all the sculptures, temples, paintings, and poetry that came into existence in India. Then he explains further, yatra arthaha shabdaha va tamartam upasarjane krita swarthao vyangtaha kavya viseshaha sadhaneti suribhikkaditaha. So where the sound and also the meaning are subdued in preference to the suggested meaning, that is called dhvani. Yatrartha sabdhova tamartam upasarjane krita swartha vyangtaha kavya viseshaha saha dhvanihi iti suribhikkaditaha. Next. Now, Abhinavagupta gives a beautiful explanation for the word Sahridaya, which is used, Sahridaya Manahpritaye. Look at that definition of who is a Sahridaya, spectator. Desham punaha Kavya anushilana Visadibhute manomukure. When the mind, like a bud, blossoms fully by constant listening, reading, and thinking about classical poetry, classical art. Varnaniya tanmayi bhavana yogita. You become one with it. Varnaniya tanmayi bhavana yogita. Tanmayi bhavana yogita. It is not anirvachaniya, it is vachaniya. It can be explained what it is. Tanmayi bhavana yogita. Te yeva sahridaya samvada sambhava. Sahridaya. They are called spectators. Now I am starting with the rising sun, which is described in
the Veda. Asau yastamra aruna uta babrusu mangalaha. Shatradriya. The rising sun puts down the darkness of ignorance, and he creates knowledge. So this is the basic concept of the Veda, that the sun drives away darkness, ignorance, and makes it bright, knowledgeable. And there is a lovely sculpture, the Chola period sculpture, approximately 1150 AD, near Kumbakonam town. You see that it is like a Ardhanari Swarupa. 3 heads are there. There is a disc behind and about 8 arms are there. And it looks as if it is Ardhanari Shiva at the initial look. But even I wrote it is Ardhanari. But above, there is an inscription which I noticed, which says Marthanda Bhairava. So, this is the concept of Marthanda Bhairava in Tamil Nadu, near Kumbakonam, 1150 AD. Now, this is found in a great temple. This temple differs from all other early Chola temples. Next one. This is the temple. This is called Rajaraja Ishwaram in inscription. And at the entrance, as you enter, around, the first sculpture you see is that Marthanda Bhairava. So, in all the niches, coasters, the sculptures that are portrayed, they are all connected with Marthanda Bhairava. That is by about 1150. One temple concentrating on Marthanda Bhairava. There is another sculpture, Bhairava, the same temple. Next one. Another Marthanda Bhairava temple, Marthanda, that's Surya and Gujarat, near Ahmedabad. Look at the sculptures, marvelous sculptures. Adityas. Next one. Wonderful. Next. This is the Tirtha associated with the temple. That's Marthanda temple at Gujarat. Now, I have one more idea that has to be understood by you. In the great temple of Chidambaram, where Nataraja dances, the temple dedicated to Nataraja. You have to the right of the Nataraja, there is an empty space. This empty space is said to be Chidambara Rahasya. What is this Rahasya? The Dikshitas, they worship first the Shakti Pida on the empty space. Shakti Pida, Devi Chakra. And above that, they worship
Shiva Chakra. And then above that, the dancing form of Shiva is portrayed. So it has what is called Shakti Shiva. Shiva Shakti Sammelana. The worship, the heart, the secret of Chidambaram temple is rooted in the worship of Shiva Shakti Sammelana. That's the Nataraja. You know its contribution. Nrittamurti. Next. This is the Shiva. This is the Chidambaram. One is in the front, another is at the back. The one at the back is called Chit Ambalam, consciousness, at the theater. In the front is called Perambalam, the great universal theater. So Shiva dances in your consciousness, Shiva also consciousness in the outer universe. That is the concept of Chidambaram. Right. Now, Abhinava Gupta, as a master of dance, he says, he gives you a definition. Our people generally don't understand that. They call it Nritta Karanam. Hasta Pada Samayoga Nrittasya Karanam Bhavet. This is the definition found in Natyasastra. What it is? Hasta and Pada and putting together the hand and the leg is called Nritta Karana. This is the general meaning. But this is not the exact meaning. There is an inner meaning. He is an extraordinary critical scholar. So he goes into each and every definition, and there are variant readings, even by the time of Abhinava Gupta. Various schools have come into existence in Bharata Natyasastra. And so he gives variant reading where he doesn't disagree. He simply says there are alternative readings for this. Where he disagrees, he says it is not possible. So he is most modern of modern critical scholar that India has produced. For example, there is one Nritta Karana called Kari Hastam. Kari Hastam is like elephant's trunk. So you hold your hand like this and you move it like elephant's trunk. But some people call it Kati Hastam. What is you put your hand in your waist with your danti. Tatra Katya Hatta Ardhachandrataya Pakshapadadhyodakaha Vanchitam. So when he says Hattapada Samaya Karihastam and Katihastam, both you can take it whichever appropriate to its occasion. Next.
There is another what you call karana, earth karana. It is called Ganta Suchi. Where in the show, where it is Ganta Suchi is karana. Suchi, Pada Suchi, some people say the leg should be raised up or here. Saguchi, acha, asya Ganta Kshetra Praptam Vadanti. But Anyetu, Suchi Mukum, Nrittahatam, Kantanchitam, Nrittahatta Kantanchitam Punaha, Kriya, taking and bringing it back is called Suchi Hastam. So, for all the 108 dance karanas, Abhinavagupta gives a precise definition over and above what is mentioned in the Natasastra. In some instances, he says that that's not acceptable, it's not good. Because avachitya ayoga, it is not appropriate in that situation, you can't use it. So this karana cannot be used in that time. In one instance, he says, these are all meant for dance exposition. So these are called nritta karanas. These are not laukika karanas. So as I say, to be very precise, you must always call it as nritta karanas. I showed you earlier, Hasta Pada Samayoga, Nrittasya Karanam Bhave. That is Nritta Karana. But Abhinavagupta gives a definition that when you say Pada, it does not mean only foot, but it is beneath the waist, the thigh, the knee, the leg, the foot, all these joined together is indicated by the word Pada. So this is Pada, from waist, then leg, knee, and foot. Put together, Pada, put together, you should take it as Padam. The lower half of the body, the movement of the lower half of the body is Padam. Then look at the definition. Purva Kshetra Samayoga Tyagena Samuchita Kshetra Antara Prapti Paryantataya Eka Kriya Karanam Vityahu. This is called Karanam. From one position till you go to the other position, end of the position, it is called Karanam. It is Kriya. It is movement. Hatta Upalakshitasya. Hatta. Purvakaya vritti, the upper part of the body is called Hasta. Shaka, Anga, Upangadehe, Upalakshitasya. Aparakaya gata parsva, Kati, Uru, Janga, Charanayoho, Sangatataya, Tritatvena vritti yojane, Karanam. This is called one movement from one position to the other, combining beautifully, artistically, the upper part of the body and the lower part of the body is called Nritta Karma. One unit. You have altogether 108 units, and they are like alphabets.
and combination of different alphabets, you bring in words and pada. That's what you do in the Nritta Karanas. Many Nritta Karanas are joined together differently. They are called Angaharas, and through them you communicate suggestive meaning. Here, you have the whole body, both the upper part of the body and the lower part of the body. Hatha, Pada, Sama, Yoga, Nrittasya Karanam Bhavet. This is Nritta Karanam. Next. Look at this one. This is Hatha. This Hatha is not any worldly suggestion. This is dance, nritta, suggestion, communication. So it is not the form, but it is the meaning. That's what Abhinavagupta says. Artha and Shabda, they are subdued, but the inner meaning is what is called the, what they are going to call it as later, rasa. Now this is, there it is Abhinaya Hasta. She is doing some suggestion. This is not Abhinaya Hasta, this is a beautiful Hasta in the movement of the Nritta. This is Alankara. Two forms, Nritta Hasta and Alankara Hasta. This is suggestion. This is what you call Dhani. The poet, she has adapted, suggests something, an old man walking like this. So it's not the form, but it is the inner meaning beyond the outline contours and also the volume. You see something inside. That is the dhani, what we call dhani. Joy. It's called sattvam. The face brings out the joy. It's not the contours. Every part of the body, every part of the face suggests something, all put together, the joy. And that is equal to what we call dhani in poetry. I have found that the 108 poses of dance karanas were portrayed in the Tanjavur Great Temple. And only 81 are completed, the rest of them are just, what you call it, blocks have been left. At that point of time, you see, beginning from Talapushpaputam, the first karana, you go around. When you go around, each karana is portrayed. Each karana is portrayed in certain form. They show that they do not conform to the definition in some instances of what is given in Abhinavagupta. But that is about 1000 AD, 1010 AD. But there is another series of dance karanas portrayed in Chidambaram, Gopura, where not only the karana, but also this Natya Shastra verse is inscribed in Chola characters above. In that, when you see that, the alternate meaning given by Abhinavagupta is found here, not in Tanjore. So, by about 1010 AD, Abhinavagupta's idea has not reached southern part of India.
But in the case of Natya, there is always movement from all over. And in Chidambaram, the Gopura, which was built around say 1150 AD, that what Abhinavagupta says in his commentary on particular Karanas, they are quoted there. So there is a difference between what is there in Tanju and what is there in Chidambaram. And by the time of 1110, that is what we call Middle Chola time, Abhinavagupta's contribution to understanding these different Karanas have already reached Tamil Nadu. Now, I come to some of these Jewish sculptures that are found in Kashmir by the side of Shankaracharya Hill, by Alexander Kaniha. They were lying. These were lying scattered, and they were collected and kept now in the museum, Srinagar Museum. This is actually a part of the temple, a part of the upper superstructure of the temple. So, judging from its size and the images, it should have been a very big temple there. But what it is, we don't know. We know only the scattered sculptures which are collected. Next. This is another sculpture, also from that. But they are all on the top. I want you to look at the form of these sculptures, which are brought from the Shankaracharya Hill. Look at that. Though it is not slim, though it is not movable, with the eyes, the nose has been damaged, the lips and so on, so beautiful. But somewhat robust type of sculpture. Next. It's a very important sculpture also from that. Look at what he holds in his left hand. It is called Katvanga. That is the bone of the dead body used as a hand, and a skull is put on the top, which is used as a weapon and usually associated with Shiva as Bhairava. This is Kapila Vishnu, Sankachakra, and three heads, Simha, Varaha. At the back, one more face, four face. And this worship of Kapila was very popular in Kashmir. Another one. Yeah. See the majesty, the bhava, emphasis on bhava. All these are assigned to
8th century or 9th century. They are robust, rough, and we don't know the exact date because there is no inscription to date them with this brought from the Shankaracharya head. That is prior to the arrival of Abhinavagupta. Next. Next. Now, in this collection, these are all the collections from there in Kashmir. In this collection, you have fairly large size of Saptamatrikas. Saptamatrikas are associated with the worship of Bhairavi. Chamunda is the last one. So, obviously, there was a very big Bhairavi temple by the side of Shankaracharya prior to the time of Abhinavagupta. Another. This is Indrani. Vajra and Satvin is added. This here. You have one Varahi. They are all about 5-6 feet height and very, very robust type of sculpture. And they suggest that there existed a very big Bhairavi temple or Saptamatrika temple by the side of Shankaracharya. Next. This is called Pinakapani. Shiva as Pinakapani, holding bow and arrow. And again, you can say that these are the art form of 8th, 9th century AD before the arrival of Abhinavagupta. Next. Now this is Shiva. You have Kapila with 3 heads, Shiva also with 3 heads, he also Shula, Trisula, and Matadamba and so on. It's also from the same place. Now, this is one of the topmost elements, small element on top of the Shikara of the temple, also found from there. Next. This is why and obviously the tantric cult that existed prior to the arrival of Abhinavagupta, which reflected in all this culture. Next. 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 Look at the beauty of it. Fantastic. Very refined, very classical. There's the difference between what you saw earlier. The eyes, nose, lips, and the hairstyle, Trinetra. This is what we call the refined classical sculpture that you should be acquainted so that you really appreciate what is great art in sculptural art in India. Masterpiece, wonderful. Though it is broken, only up his neck is neck. Look at that. The treatment of the eyes, they are all simple lines and volume, but they give you more emotion, more beauty, joy, aesthetic joy. That is Kavya, Kavaniyam, art. And this one is Bhairava on the right. Next. Is another, but somewhat slowly getting refined. Next. We have one big
Prabhavali in this collection. But look at the change, the flowing lines, very soft body, and the seating and the turn and the hand position. This is a very great art of Kashmir. This is later evolution. Maybe, I don't know, I can't tell you, but I feel that it could be contemporary with Abhinav Gupta. Because when you understand what is Sahridaya, what is spectator, what the art form gives you in response, as described in Abhinav Gupta, these are masterpieces, absolute masterpieces. This is unfortunately only the Prabha is there. The main image is not there. We don't know what happened to it. Maybe it was in the central part of the Garbhagriha, one of those three temples. And this has to be dated to around the time, 10th century, about the time of Abhinav Gupta. It is necessary to see what was the sculpture temple that was in existence at the time of Abhinav Gupta, dated or undated, stylistically dated, must be compared so that the impact as he has left on music, as he has left on dance, so also he has left on sculptures. In order to study that, we need someone to take up all this as a project. Look at the next one. What great masterpiece it is. Was seated pose with the third in his hand. Next. 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 Now this one. This seems to suggest this is one of the Bhairavas, Ekta Bhairavas. You have Ekta Bhairavas around Bhairava Bhattaraka in the center, according to Kashmir Sayusam, and he seems to be one of the Ekta Bhairavas who is considered the what we call the Parivara Devatas around the main Bhattaraka, Bhairava Bhattaraka and Bhairava Bhattaraka. Next. Now, this temple, this is the great Marthan temple. Marthan, they call it Marthan now. Built by Lalita Chitya Muktipada. Muktapada. If it had existed without damage, it would have remained as great as the Tanjore temple, 200 feet in height. What an extraordinary temple it is. How they built it, and what are the gods to which they dedicated it. Of course, we have, I am very thankful to Kaul, IGNC Kaul, who sent me a very valuable article yesterday. And also Bangru, Virendra Bangru, who gave me a very informative article about this temple and its surroundings. It is an extraordinary temple. And Lalita Aditya Muktapada is said to have built this temple around 750 years, which means 200 years earlier than Abhinav Gupta. What are the association of
Abhinavagupta with this temple when it was existing. Such a great temple. What was the impact of this temple on Abhinavagupta? Or Somanada, or Uttaradeva, whatever the case may be. We don't know. We need scholars to spend the time and study. I showed you one, I forgot to. No. Next. No, right. Next. Now look at this. I showed you that this is Katvanga. And this is associated with Bhairava, one of the Bhairavas. Now you come down. Exactly similar one is found on the enclosure of Amarthan temple. First, one of the secondary deities, Parivara Devatas. Go. Look at this. So they say that this is dedicated to Surya, and all the later literature in Munilamata and other literature in Kashmir, they call it Surya. When you go into the origin of Indian iconography, art history, you find Surya is Agni, Rudra. Rudro va yesha yad Agni. Agni is Rudra. Agni is Vishnu. Why Agni is Vishnu? When the heat energy reaches a higher point, it becomes a light, Vishnu, shining. Rudra is the heat energy, Vishnu is the light energy. These two are inseparable. So, Surya is worshipped as Shiva Surya in Shiva temple, and Narayana, Surya Narayana in Vishnu temple. There is no such division as Saivam or Vaishnava. How can you separate heat energy and light energy? You can't. This is what is also called Ardhanari Swarupa. Shiva and Shiva both in Shatarudriya. So, he is identical with Surya, and when he is very powerful, ferocious, and ultimately ends up in knowledge system, he becomes the Bhairava Bhattaraka. So there is a combination of Bhairava and Shiva and Surya in very early iconography. And this firms tell us that it is dedicated to Surya. Look at that. What a great enclosure. Next. Now, it has around and the enclosure wall, the bottom, both in the main temple and also outside. Next. You see, this is the arch-like thing, and there you have a small figure which seems to suggest to which this deity is dedicated, like a Vahana. Here again, in this temple, in Marthan temple, you have this sculpture. It is still in situ, original position. Here you have got Tamara, and here you have this Katvanga.
Khatwanga generally is not associated with Vishnu. It is always associated with Bhairava, ferocious nature of Shiva. And so, when it is still in position in that, to what deity this is dedicated requires further study. And this has to be studied in terms of what Abhinavagupta speaks about in all his philosophical literature. This has to be correlated between this and Abhinavagupta's Bhairava, Vijnana Bhairava, and so on. Look at that. He has a sword. Now, go back. You see there a sort of small image, like a peacock. Look at that. Peacock. So we have Hamsa as one of the vehicles of one of the Bhairavas, one of the Ekta Bhairavas. So if this is an indication, then this is a Bhairava complete. When Bhairava becomes the Parivara Devata of this deity. So there seems to be a combination of Surya and Bhairava at particular point of time. And what is the impact of Abhinavagupta in his text, in his philosophy, combining these two and this cultivation? These are for further enquiries. Next. See? One is sword and another is a flower. Next. How can people destroy this? Such a monument. What a wonderful one. Wonderful. And it is unimaginable. Human beings can destroy it. And it's very unfortunate that this has not received that much of attention after nearly 60, 70 years of India's independence. Is it proper? Is there any temple equal to this anywhere? 750 AD. Unfortunately, not only appreciation of the temple, but also the philosophy behind it and authenticity on the basis of which we come to all these decisions we require. I hope next this year, look at this, Ganga and Yamuna, all temples of Ganga and Yamuna. Next. This is next. That next. I'm going to show you only two coins. Look at these two coins. This is a Greek coin, Indo-Greek coin issued by Bactria king beyond Afghanistan, Balochistan, and Bactria, south of Caspian Sea and other Black Sea. These coins were in circulation. Look at this figure. You have got the Greek characters, but the figure seated in the center has got human body only up to the waist, and beneath it, it has got only something like creepers. Look at that. And you have the name of the Greek king who issued the coin, Telepos. And the back of this, you see this, you have the sun with rays issuing from his head, and probably Usha. And you have inscription in Kharosthi, Maharajadi Rajasya.
Sun and moon. Yeah? Sun and moon. Look at that. So this is not confined only to Kashmir. They are also connected with South, and they are also connected with what you call the West Asian countries, where this idea, this is what we call Aruna. Aruna came only up to waist. His mother is in a hurry. She just broke it, and he came out only up to this. And it became, this is Aruna. And this one, with the rays shown, sun and the goddess. Next. And the language is Prakrit. This is Greek, the language is Prakrit. Next. Look at another kind. The other one. Plato. This is his portrait. And this is his own, this thing, what you call it, Greek. Sun. Hmm? Sun. Is it? Sun in chariot. Sun, you can see the sun god. With the rays. So, our concepts have gone in different ways towards the West Asia, towards the Central Asia. I can show you many more things in China. Towards China, there are many great Buddhist acharyas who went along with the Silk Route into China and Japan, and also through the sea route to Thailand, Cambodia, Laos. It is a universal concept, universal lifestyle. Except racially, we may have different faces and the language may be different, but the concepts were the same all over Southeast Asia, in East Asia, in West Asia. You have it. So the Bhairava is the king who was made into Bhairava in Indonesia and Java and so on. He is identified with Bhairava. So, the contribution of Abhinavagupta, not only to philosophy, but also art appreciation, music, dance. I forgot to tell you, 3 generations after Abhinavagupta, one of his descendants went to Devagiri in Western part, and his grandson, Sarangadeva, he wrote Sangeeta Ratnakara. So it was Abhinavagupta's tradition that went into Devagiri. And from Devagiri, it went down to Mysore, Karnataka. And from Karnataka, one of the greatest thinkers and ministers called Govinda Dikshita in around approximately about 1600. He moved to Tamil Nadu. In Tamil Nadu, he was the what you call the minister to the Nayak king, Vijay Raghunatha Nayak, and his son. And the person who went there was Govinda Dikshita, and his son is called Venkatamagin. He wrote a book called Chaturdandi Prakashika. And that Chaturdandi Prakashika gets all the lakshanas of the classical ragas of today. And so what we call today, what you call Karnataka Sangeeta in southern part of India comes from Abhinavagupta's tradition. Friends, there is more to read, more to learn, more to feel. Thank you very much for giving me this opportunity. Thank you so much. Thank you so much, Dr. Saab. Sunil ji, Thank you, Bharti. First of all, my hand folded namaskar and pranam to Acharya ji.
even though he was not keeping well. When I spoke to him yesterday, and since he is past 90, but after hearing that it's a very important session on Acharya Abhinav Gupta, he could not resist and he said he will try to make it for today. So it was really a brilliant talk today because we never knew these kinds of facets of Acharya Abhinav Gupta are there in the whole of the country and beyond. Acharya Nagaswamiji not only told us about the different Karanas, the Chidambaram Rahasya, apart from that, he also explained us how the art in Kashmir and other parts of the India are influenced by the thoughts of Abhinavagupta. So I would also like to tell the audience here that Shri Ramachandra Nagaswamiji had in 1985 celebrated the 1,000 years of Acharya Abhinav Gupta, maybe on certain basis of certain calculation. He organized a seminar in Chennai, and that's how his love for Acharya Abhinav Gupta was there. So today, even today, we are so much of surprised by the influence of Acharya that Sumanya, who started this session with the invocation of Bhairav Stotra, is from Assam. Acharya Nagaswamiji is from Tamil Nadu. We are from Kashmir. And Dr. Navjivan Rastogiji, who is at the center of India from Lucknow, he has joined us. So see how Acharya is integrating us whole of India together. We have today luminaries like Dr. Padma Subramaniam ji. Madam, I namaskar to you. Dr. Harmohan Mishra ji has joined us from Puri. Dr. Navjivan Rastogi ji has joined us from Lucknow. So all these Acharyas here joining us today and blessing us, it's a great blessing for all of us, and we are so fortunate that we were able to hear Dr. Nagaswamiji for such a long time, and of course the revelations he made, which were not known to us, like a descent of Abhinav Gupta's lineage with Sharangdev. Although we know Sharangdev was originally from Kashmir, but that he was connected through a lineage from a relation with Abhinav Gupta was not known to us. So this is how we are slowly and steadily demystifying the reality and trying to understand the whole of it. Acharya ji, many thanks to you. We are so blessed that you came to here today. You gave your special talk, and I know that Acharya ji is always ahead of time. Many years back, I saw him in giving the presentation in PowerPoint when many of us were struggling to even create a PowerPoint. So he was ahead of his times always. Dr. Navjivan Rastogi ji, since you have joined, I would like you to give a few words before our Meera Rastogi ji will start the lecture. Sir, your 2 words are very important. Dr. Sahab, two words are important. Dr. Rastogi ji, please unmute. And I had that then. It's a beauty of India, how diverse are the regions connected with one that is country. Thank you, Renaji. I have nothing to say. Okay, please go ahead. Thank you. I wish Dr. Meera Rastogi well. Thank you, Dr. Bharti ji, can you introduce Meera ji to the audience? Ji, The speaker. I am deeply obliged to be introducing our next speaker, Dr. Meera Rastogi ji. She has taught Kashmiri Shaivism and other branches of Indian philosophy in the Department of Sanskrit and Prakritic Languages in Lucknow University. She presented her doctoral dissertation इच्छा स्वतंत्र तथा कार्य कारण भाव भारतीय तत्व मीमांसा में कश्मीरी शिवाद्यवाद के अंतर्गत एक अध्ययन. In 1982, under the guidance of Professor Navjivan Rastogi ji. Meera ji has also worked on Abhinav Gupta ka Vak Darshan as a general fellow of Indian Council of Philosophical Research. She also presented a dissertation on Abhinav Gupta ke Mangal Shlokan ka Sa-Anuvad Adhyan in postgraduate level. She worked for Encyclopedia of Indian Philosophy.
She has published research papers related to various topics of Kashmir Shaivism and delivered many lectures on different subjects related to this system. Welcome, Dr. Meera Rastogi ji. Over to you. मैं सबसे पहले अपने गुरु प्रोफेसर रस्तोगी जी को प्रणाम करके मैं अपनी बात कहना यहाँ प्रारंभ करूंगी। यहाँ अन्य जो समस्त उपस्थित सभी विद्वजन हैं, उन सबको भी सादर मेरा प्रणाम। साथ ही इस कार्यक्रम के आयोजकों को भी मेरा हृदय से धन्यवाद कि उन्होंने आचार्य अभिनव गुप्त की इस पावन जयंती के कार्यक्रम में मुझे भाग लेने का अवसर दिया है। अब मैं अपनी बात शुरू कर रही हूँ। बहुमुखी प्रतिभा के स्वामी, परम दार्शनिक, तंत्र शास्त्र के प्रकांड विद्वान, परम साहित्य शास्त्री, नाट्य विद्या विशारद, भारतीय कला शास्त्र के मर्म को उजागर करने वाले, भारतीय संस्कृति के विविध सूत्रों को एकान्विति के तार में जोड़कर गूंथकर एक समग्र चिंतन का विकास करने वाले आचार्य अभिनव गुप्त का सादर स्मरण और वंदन करते हुए अगर हम उनके अवदान पर दृष्टि डालते हैं तो पाते हैं कि जीवन का कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जिसका स्पर्श उनका चिंतन ना करता हो। आप कंटिन्यू करें मीरा जी। जी, मैं इसको फुल स्पीकर्स व्यू करना चाह रही थी। ओके, ठीक है। तो आचार्य अभिनव गुप्त के जब हम अवदान पर दृष्टि डालते हैं तो पाते हैं कि उनके जीवन का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है कि उनका चिंतन उसका स्पर्श ना करता। आचार्य अभिनव गुप्त तांत्रिक परंपरा के पुरोधा आचार्य हैं और तांत्रिक संस्कृति समग्रतावादी चिंतन को ही प्रस्तुत करती है। यहाँ सबका स्वीकरण ही यहाँ पर प्रतिपादित किया गया है, किसी का निषेध नहीं। इसी परंपरा से निकला हुआ जो ये त्रिक संप्रदाय का चिंतन है वो पूर्णतावादी दृष्टि का ही परिपोषण करता है और आचार्य अभिनव गुप्त इस पूर्णता दृष्टि के ही परम प्रतिष्ठापक आचार्य हैं। मालिनी विजय वार्तिक में उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि वो पूर्ण तत्व ही अपनी इच्छा से स्वयं को नाना रूपों में भाषित करता है। वो पूर्ण तत्व चैतन्य रूप है और उसी को शास्त्रों में भैरव कहा गया है। तत्वे तत्वे स्वेच्छया देवदेवाः सर्वा सर्वा भूमिम आलम्बमानः पूर्णैकात्मा पूर्ण संवित स्वरूपः श्रीमान शास्त्रे भैरवो असौ निरुक्तः। तो अगर हम उस परंपरा पर दृष्टिपात करें जिसको लेकर आचार्य अभिनव गुप्त आगे बढ़ रहे हैं तो उसमें हमको सबसे पहले वसुगुप्त मिलते हैं जो सबसे पहले आत्मा के स्वरूप को बताते हैं। प्रत्येक दर्शन मीमांसा आत्मा के स्वरूप के विचार से ही प्रारंभ होती है। तो यहाँ पर भी पहले ही सूत्र में आत्मा का स्वरूप बताया गया, चैतन्यम आत्मा। उसके बाद जब आचार्य सोमानंद अपनी शिव दृष्टि लिखते हैं तो उस चैतन्य रूप आत्मा को नाम देते हैं शिव, कि वो शिव रूप, शिव संज्ञा से उसको पुकारा जाता है, शिव नाम उसको दिया जाता है। वो चैतन्य ही शिव है और उसके अंदर पंच शक्तियां निरंतर प्रवहमान है। 5 शक्तियों का प्रवाह निरंतर चलता रहता है, चित, आनंद, इच्छा, ज्ञान और क्रिया। वो स्पष्ट रूप से कहते हैं कि वही ये जो आत्मा है, ये जो शिव है वो हमारी अपनी आत्मा है, हमारे अंदर समाविष्ट है। अस्मद रूप समाविष्ट आत्मा, ये बात वो शिव दृष्टि के ही दूसरे ही श्लोक में कहते हैं। ये आत्मा स्वयं अपने स्वरूप को छिपाती है और अपने स्वरूप को छिपा करके वो अपने को विविध रूपों में भाषित करती है। इस तरह जो कुछ भी संसार में भाषित हो रहा है
वो सब शिव का अपना ही, शिव चैतन्य का अपना रूप है, इस तरह शिव का रूप है। इस तरह वो सर्व शिवता की ही सिद्धि करते हैं। इसके बाद जब आते हैं आचार्य आचार्य उत्पल, तो उनका लक्ष्य है कि इस शिवता की पहचान कराना, इस पूर्णता की पहचान कराना, जिसको कि वो आत्मा स्वयं स्वयं अपने ऊपर आवृत करता है, अपने ऊपर ढकता है अपने स्वरूप को। उसको खोलने के लिए, उसको उन आवरणों से मुक्त करने के लिए उसकी शक्तियों की उसको पहचान कराना आवश्यक है। तो इसलिए उनका लक्ष्य है शक्त्याविष्करण का। तो वो पूरी अपनी सभी कारिकाओं के माध्यम से उस महेश्वरता की पहचान कराने की कोशिश करते हैं। महेश्वरता क्या है? जहां पर ज्ञान और क्रिया शक्तियां बिना किसी सीमा के विद्यमान हैं। तो इस तरह से ये एक ही चैतन्य है, उसी के अंदर सब कुछ सिमटा हुआ है, उसी की सारी सामर्थ्य है, उसी के माध्यम से सारे संसार की अभिव्यक्ति हो रही है। ये बात निरंतर प्रत्येक आचार्य के द्वारा स्थापित की जा रही है। इसके बाद जब आचार्य अभिनव गुप्त आते हैं, तो उनका भी लक्ष्य उसी पूर्णता दृष्टि का परिपोषण करना है। उनका मुख्य योगदान ये है कि जो बात उनको परंपरा से प्राप्त हुई, उसको युक्तियों से परिपोषित करना, उसको इतना सुदृढ़ आधार देना कि उसके विषय में जितने प्रश्न उठ रहे हैं, उन सारे प्रश्नों का वो समाधान करके उस पूर्णाद्वैत की सिद्धि कर सकें। और इस त्रिक चिंतन का परम लक्ष्य उसी पूर्णाद्वैत की सिद्धि वो सिद्धि करना चाहते हैं। तो अब हम इस भूमिका के साथ जब आगे बढ़ते हैं, तो हम अब यहाँ पर ये देखेंगे कि अभिनव गुप्त ने उस पूर्णता की सिद्धि के लिए किस किस संदर्भ में किन युक्तियों का प्रयोग किया है। लेकिन इस प्रसंग में सबसे पहले हमको पूर्णता की धारणा को समझना आवश्यक है। पूर्णता क्या चीज है? पूर्णता एक सर्व समाहारी प्रत्यय है। सर्व समाहारी मतलब जिसके अंदर सब सिमटा हुआ है, सारे विरोध उसी के अंदर विद्यमान है। सत असत जो कुछ भी है, जो कुछ भी संभाव्य है, वो सब उसी के अंदर है। उससे बाहर कुछ भी नहीं है। अगर उससे बाहर होगा तो वो प्रकाशमान ही नहीं होगा। तो ऐसा पूर्ण तत्व जो पूर्णता का, उसकी पूर्णता का परिणाम क्या होता है? अब उसको किसी की अपेक्षा नहीं। जब सब कुछ उसके पास है तो किसी भी कार्य के लिए उसको किसी की अपेक्षा नहीं है, इसलिए वो अनन्यापेक्ष है, सर्वाप्त है, सब कुछ उसको प्राप्त है। इसलिए कुछ भी नया वो प्राप्त करने की उसको इच्छा ही नहीं है। कुछ नया है ही नहीं, जो कुछ है उसी के अंदर है। इसीलिए वो निराकांक्ष है। निराकांक्ष का मतलब उसकी कोई आकांक्षा ही नहीं है। अब वो इसी कारण स्वात्म विश्रांत है, अपने ही स्वरूप में वो विश्रांत रहता है, उसको अपने से बाहर जाने की कोई आवश्यकता नहीं। और जो ये स्वात्म विश्रांति है, ये स्वात्म विश्रांति ही उसको आनंद का अनुभव कराती है। और उस आनंद के अनुभव, जब वो अपने में ही विश्रांत है, तो वो अपनी पूर्णता का वो अनुभव करता है। पूर्णता के आनंद के अनुभव की जो अभिव्यक्ति है, वो होती है उसकी क्रीड़ा। ये क्रीड़ा ही, उसमें जो बराबर तरंगे उठती हैं, आनंद की हिलोरें उठती हैं, वही है उसकी क्रीड़ा। ये क्रीड़ा ही इस संप्रदाय में पंचकृत्य कारिता के रूप में बताई गई है। पंचकृत्य क्या है? सृष्टि, स्थिति, संहार, तिरोधान और अनुग्रह। अब देखिए, सब चैतन्य के अंदर ही घटित हो रहा है। तो चैतन्य के अंदर एक विचार उठा, जब एक विचार उठा तो बाकी सारे विचार उसके अंदर छुपे हुए हैं। तो एक विचार उठा, कुछ देर रहा, फिर वो विचार विलीन हो गया, फिर नया विचार उठा। तो ये हो गया सृष्टि, स्थिति, संहार। जब एक विचार उठा तो सारे विचार विलीन थे, तो वो हुआ तिरोधान। और जब उसने अपने को अपूर्णता से हटा लिया, अपने पूर्ण स्वरूप में पहुंचा, तो सब कुछ उसने अपने अंदर ग्रहण कर लिया। तो ये जो 5 शक्तियां हैं, वो 5 व्यापार हैं, पंचकृत्यकारिता, वो निरंतर उसकी क्रीड़ा का ही परिणाम है। एक तरंग उठी, फिर दूसरी तरंग उठी, फिर तीसरी तरंग उठी। ये इस तरह से उसके आनंद की जो हिलोरें उठ रही हैं, वही उसके इस चैतन्य के व्यापार में प्रतिभासित हो रही हैं। इस पूर्णता को समझाने के लिए आचार्य अभिनव गुप्त के ग्रंथों में 3 न्यायों का लगातार प्रयोग हम देखते हैं। पहला न्याय हम
Not audible, madam. डॉक्टर मीरा जी, आपका ऑडियो म्यूट हो गया, म्यूट नहीं हो गया है। कभी कभी ना सिग्नल वीक उनका होते हैं। कनेक्शन, हाँ हाँ, जी, सिग्नल वीक होते हैं। वी शुड वेट फॉर अ few वी कैन minutes. वेट। यस यस यस। जी 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 मैम। जी वो पता प्लीज शायद लाइट कंटिन्यू। चली। हाँ, ओके। जी जी। तो फिर मयूरान रसम न्याय के अलावा दूसरा न्याय वो लेते हैं दर्पण नगरन न्याय। दर्पण नगरन न्याय जैसे दर्पण वो तब लेते हैं जब वो बताना ये चाहते हैं कि जैसे चेतना के अंदर विविध जो नाना प्रकार के प्रतिबिंबित हो रहे हैं, तो उनकी सत्ता दर्पण उस चेतना से भिन्न नहीं है। चेतना की पृष्ठभूमि पर ही वो सारे प्रतिबिंब भाषित होते हैं। चेतना के अतिरिक्त उनकी उन प्रतिबिंबों की कोई सत्ता नहीं है। जैसे दर्पण में जो भी वस्तु भाषित हो रही है, जिसका भी जो भी प्रतिबिंब भाषित हो रहा है, उसकी दर्पण से भिन्न सत्ता नहीं है। इसी तरह जब वो ये बताना चाहते हैं कि जब सब कुछ एक तत्व के अंदर विद्यमान है और उसके उस विद्यमान होने पर भी और उसमें जो बार बार तरंगें उठ रही हैं, जैसे समुद्र के अंदर नाना लहरें उठने से समुद्र के स्वरूप में कहीं कोई परिवर्तन नहीं होता, वैसे ही इस इन नाना प्रकार की आभासों के प्रतिबिंबों के प्रतिबिंबित होने से नाना प्रकार की लहरों के की तरह से ही उस पूर्णता के स्वरूप में कहीं पर भी कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई उससे अंतर नहीं पड़ता। तो ये पूर्णता दृष्टि को समझाने के लिए ये 3 न्यायों का उन्होंने प्रयोग किया है। अब हम देखें तो हम पाते हैं कि अभिनव गुप्त के समस्त ग्रंथ ये इसी पूर्णतावादी दृष्टि का परिपोषण करते हुए हमें मिलते हैं। उनका हर विवेचन इसकी छाया से युक्त है। हम यहाँ पर कुछ निश्चित संदर्भों को लेकर इस पर बात करेंगे। एक तो सत मीमांसा का संदर्भ ले लेते हैं, परमार्थ मीमांसा का संदर्भ ले लेते हैं, जगत मीमांसा का संदर्भ ले लेते हैं, ज्ञान मीमांसा का संदर्भ ले लेते हैं और मोक्ष मीमांसा का संदर्भ ले लेते हैं। तो इन 5 संदर्भों में हम यहाँ पर बात करते हैं। तो पहला जो संदर्भ हमने यहाँ पर लिया है कि सन्मीमांसा का संदर्भ। यहाँ पर सत्य के स्वरूप में उस पूर्णता को बताने के लिए वो प्रकाश विमर्श में की महत्ता की युक्ति को प्रस्तुत करते हैं। तो ये प्रकाश विमर्श महत्ता की बात तो आचार्य उत्पल भी कर रहे हैं, लेकिन उसको विस्तार से उसको आधारभूत बना करके यहाँ की सारे विवेचन को करने का काम आचार्य अभिनव गुप्त का है। वो बताते हैं अपना वृद्ध विमर्शनी का उनका पहला ही मंगलाचरण है, उसमें उन्होंने परम शिव के स्वच्छत्व और स्वच्छंदत्व 2 वृत्तियों से युक्त बताया है परम शिव को। स्वेच्छा अवभासिता शेष लोक यात्रात्मने नमः शिवाय शश्वदच्छन्न स्वच्छ स्वच्छंद वृत्तये। तो ये स्वच्छत्व और स्वच्छंदत्व ये 2 वृत्तियां उस परम शिव में विद्यमान रहती हैं। अभी परम शिव क्या है? परम चैतन्य। जिस चैतन्य की बात अभी तक हो रही थी, वही जब वो सारी सीमाओं से मुक्त है तो वो परम शिव को ही उन्होंने सोमानंद ने बताया था कि चैतन्य ही शिव है। तो वही शिव जो है वो यहाँ पर उसको और स्पष्ट करने के लिए यहाँ कोई संकोचन नहीं है, तो इसको परम शिव कहा गया। अब वो परम शिव में 2 वृत्तियां विद्यमान है, स्वच्छत्व और स्वच्छंदत्व। स्वच्छत्व के कारण उसमें प्रकाशित करने की सामर्थ्य है और ये प्रकाशन ही प्रतिबिंबन है, और स्वच्छंदत्व के कारण वो अपनी इच्छा से स्वाभाविक रूप से गतिशील रहता है और वो गति में कोई नियमन नहीं है, वो किसी भी प्रकार से गतिशील हो सकता है।
यही स्वच्छत्व और स्वच्छंदित्व की वृत्तियां ये स्फुरित होती है प्रकाश और विमर्श के रूप में। जिसमें जितनी स्वच्छता होगी उसमें उतनी ही प्रकाशन सामर्थ्य होगी। तो अब जो प्रकाश पक्ष है वो क्या करता है, स्वयं प्रकाशित भी हो सकता है और जो कुछ भी उसमें प्रतिबिंब पड़े उसको वो प्रकाशित, उस प्रतिबिंब को प्रतिबिंबित भी कर सकता है। तो ये जो उसकी प्रतिबिंबन सामर्थ्य है, प्रकाशन सामर्थ्य है, तो ये प्रकाश पक्ष में विद्यमान है। ये कहाँ से आ रहा है, किसका प्रतिबिंबन कर रहा है? जो कुछ प्रकाश के अंदर है उसी का वो प्रतिबिंबन करता है। प्रकाश के बाहर कुछ नहीं है, क्योंकि जो है वह भाषित होगा और जो नहीं है, जो भाषित नहीं हो रहा है वो नहीं है। तो इसलिए जो भी भाषित हो रहा है उसी की सत्ता है, जो भाषित नहीं हो रहा है, जो प्रकाशित नहीं हो रहा है उसकी सत्ता यहाँ पर वो मानी नहीं जा सकती। तो प्रकाश पक्ष जो है उस सत्ता को निर्धारित करता है, जो भी प्रकाशित होगा उस सत्य है। अब उस प्रकाश जो प्रकाशित हो रहा है उसको हम जानते कैसे हैं? विशेष रूप में हम जानते ये वस्तु ऐसी है, ये ऐसी है, इसके विशेष रूप का निर्धारण उसका एक दूसरा पक्ष है सत्य का विमर्श। उस विमर्श के माध्यम से उस प्रतिबिंब के स्वरूप का, विशेष स्वरूप का निर्धारण होता है कि वो किस रूप में है। तो इसी को और वो विमर्श का काम क्या है, किसी भी रूप में उस विषय को भाषित करना, क्योंकि वही उसके स्वरूप का निर्धारित कर रहा है। किसके द्वारा निर्धारित कर रहा है? वाक की सहायता से निर्धारित कर रहा है। वाक शब्द देती है, वाक लेकिन वो शब्द नहीं है जो हम बोल रहे हैं, ये तो वैखरी वाणी है। इसके ऊपर मध्यमा वाणी है जिसमें कि वाचक और वाच्य अंदर हमारे विद्यमान है। उसके भी ऊपर पश्यंती वाणी है जिसमें सारे वाचक वाच्य अभिन्न भाव से विद्यमान है। इसके ऊपर परावाक का स्तर है और उस परावाक के स्तर पर सारे वाच्य वाचक, कोई वाच्य वाचक का भेद विद्यमान नहीं है, इसीलिए वो परा है, वो पूर्ण है, वाक रूप है, क्योंकि वो सब कुछ कहने में समर्थ है। और ये परावाक कहाँ है? उसी विमर्श के स्वरूप में अनुसूत है, विमर्श से भिन्न नहीं है। विमर्श उसी के द्वारा उस प्रतिबिंब के स्वरूप का निर्धारण करता है। तो ये प्रकाश और विमर्श के माध्यम से ही सारी पूर्णता के माध्यम से, जो पूर्ण तत्व है उसके माध्यम से सारे वैचित्र्यों का भाषण होता है। तो इस तरह से वो सारी भाव व्यवस्था को तो प्रकाश पक्ष के द्वारा यहाँ पर स्थापित करते हैं अभिनवगुप्त, और जो भेदाभेद व्यवस्था है उसका निर्धारण करता है ये विमर्श पक्ष। तो ये जो प्रकाश और विमर्श की धारणाएं हैं उन्हीं के माध्यम से एक पूर्ण सत्य से सारे संसार के विकास की प्रक्रिया को समझाया जा सकता है, चेतना के अंदर ही परिघटित होता हुआ। ये बात यहाँ पर सिद्ध की गई है। ये विमर्श बहुत तरह के काम कर सकता है। उन जो प्रतिबिंब आभासित हो रहे हैं उनको जोड़ सकता है, उनको अलग कर सकता है, उनको मिला सकता है, संयोजन, वियोजन, अनुसंधान, और इस तरह से वो उसके विविध प्रकार के विषयों का वहां पर भाषण कर सकता है। लेकिन ये हमें कभी नहीं भूलना है कि ये सब हमारी अपनी चेतना के अंदर हो रहा है, चेतना के बाहर कुछ नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि आत्मा ही अपना प्रतिबिंबन भी कर रही है, या चैतन्य अपना प्रतिबिंबन भी करता है और आत्म प्रत्यवमर्शन भी करता है। और ये आत्म प्रत्यवमर्शन वाक के माध्यम से होता है। तो ये प्रत्यवमर्शन जब वाक के माध्यम से होता है तो ये वाक क्या है? आंतरिक शब्दन। और ये आंतरिक शब्दन सारे अनुभवों का, सारे विचारों का, सबका आधार है। अब एक बात और यहाँ पर देखने की है कि ये प्रतिबिंबन जो यहाँ पर जिस प्रतिबिंबन की बात हो रही है उसके लिए जब हम दर्पण में कोई प्रतिबिंबन की प्रक्रिया की बात करते हैं तो वहां पर किसी बाहरी बिंब की आवश्यकता होती है। लेकिन यहाँ पर बिंब जो है ये बाहरी नहीं है, चेतना के अंदर ही जो विषय हैं उनको वो उसकी अपनी स्वतंत्र इच्छा जो है और उसके माध्यम से ही वो बिंब, वो जो विषय है वो उसमें प्रतिबिंबित हो रहे हैं। जो कुछ भी उस चेतना के अंदर विद्यमान है वो उसी की अपनी स्वतंत्र इच्छा से उसी के धरातल पर भाषित हो रहा है। तो अब ये स्वतंत्र इच्छा कहाँ से आ गई? तो कह रहे हैं वो विमर्श ही स्वतंत्र इच्छा भी है।
विमर्श ही जब उसको आधार, उसको स्वरूप देता है, सब कुछ प्रकाश में तो एक जैसा है, विमर्श ही उसके निश्चित स्वरूप का निर्धारण कर रहा है, तो विमर्श ही उसको एक निश्चित स्वरूप प्रदान करके एक विशिष्ट आकार प्रदान कर रहा है। अब ये इस तरह से प्रकाश और विमर्श की धारणा के द्वारा इस पूर्ण सत्य की कल्पना को यहाँ पर प्रस्तुत किया गया। इसके अलावा यहाँ पर एक और धारणा है, प्रतिभा की धारणा, जो इस पूर्णता की दृष्टि को की परिपोषक, जो पूर्णता की दृष्टि को और अच्छी तरह परिपुष्ट करती है। प्रतिभा शब्द में भा धातु का प्रयोग है। भा का मतलब भान भी होता है और भाषण भी होता है। भाषण माने प्रकाशन, जो भी प्रतिबिंबित हो रहा है उसका भाषण हो रहा है, और भान माने जो हमें प्रतीत हो, जैसे हम उसका ग्रहण करें। तो ये ग्रहण करने का काम और प्रतिभा और भाषण मतलब प्रकाशन करने का काम, भाषण और प्रतिभाषण दोनों यहाँ पर घटित होता है। तो ये जो एक ही तत्व में ये दोनों कार्य व्यापार विद्यमान है, भाषण भी और प्रतिभाषण भी। भाषण काम है प्रकाश का और प्रतिभाषण काम है विमर्श का। तो ये प्रतिभा जो है, ये दोनों काम एक साथ करने, भाषण जो प्रतिभा की धारणा है उसमें ये दोनों व्यापार एक साथ गूंज दिए गए हैं। तो ये प्रतिभा शब्द इस पूर्णता का और अच्छी तरह से इसका प्रतिनिधित्व करता है। ये भाषण और प्रतिभाषण ही प्रकारांतर से अनुभूति और अभिव्यक्ति के रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं। इन्हीं को काव्य शास्त्र में भावयित्री और कारयित्री प्रतिभा के रूप में परिभाषित किया जाता है। जिसकी चेतना में जितना ज्यादा प्रतिभाषण सामर्थ्य होगा वो उतना ज्यादा प्रतिभावान कहलाता है। तो इस तरह से ये प्रतिभा की धारणा यहाँ पर इस पूर्णता की परिपोषक धारणा के रूप में प्रस्तुत की गई है। लेकिन अब यद्यपि ये प्रतिभा की धारणा ईश्वर प्रतिविज्ञा कारिका में ही आ रही है, लेकिन इसके स्वरूप को विस्तार से समझाने का काम आचार्य अभिनवगुप्त करते हैं। इसके अलावा पूर्णता की पोषक एक और धारणा है, अहम प्रत्ययोमर्श की धारणा। अहम प्रत्ययोमर्श क्या है? सारे परामर्शों का विश्रांत स्थान। ये अहम वो अहम नहीं है जो हमें अहंकार के द्वारा हमारे अंदर अहंता की प्रतीति होती है, उस अहंकार की बात, उस अहंकार जन्य अहम की बात नहीं हो रही है। ये वो अहम है जो निर्विकल्पक है, जिसका कोई प्रतियोगी नहीं है। हमको हर समय जो सोते जागते हर समय जो हमें मैं होने का, मैं का बोध होता रहता है कि हम हैं, इसका जो बोध होता रहता है, सारे ज्ञान जाकर जिसमें विश्रांत होते हैं, वही अहम यहाँ पर अहम प्रत्ययोमर्श के द्वारा बताया गया है। ये चेतना का स्वाभाविक रूप है। इसको हम पाणिनि के अहम प्रत्याहार से भी समझ सकते हैं कि जैसे अहम प्रत्याहार के द्वारा सारे व्यंजनों और सारे ध्वनियों को ग्रहण कर लिया जाता है, वैसे ही सारे प्रत्ययोमर्श और सारे अनुभव इसी अहम प्रत्ययोमर्श के अंदर विश्रांत होते हैं। इसी अहम प्रत्ययोमर्श को यहाँ पर पूर्णाहंता भी कहा गया है। और तांत्रिक संस्कृति में ये तांत्रिक विचार परंपरा में इस पूर्णाहंता की धारणा का विशेष महत्व है, बार बार इसका ध्यान दिलाया गया है। तो इस तरह से हम इस संमीमांसा के क्षेत्र में हम देखते हैं कि किस तरह आचार्य अभिनवगुप्त ने इस पूर्णता दृष्टि का परिपोषण करने का प्रयास किया। अब हम दूसरा संदर्भ लेते हैं परमार्थ मीमांसा का, कि परम सत्य के स्तर, परम तत्व के स्तर पर ये क्या तर्क देते हैं। तो यहाँ पर वो युक्ति देते हैं शक्ति और शक्तिमान की धारणा की, कि पूर्ण द्वैत की सिद्धि का ये सबसे महत्वपूर्ण तर्क है कि पूर्ण तत्व कौन हो होगा? जो निराभास भी हो सको और साभास भी हो, विश्वमय भी हो और विश्वोत्तीर्ण भी हो। तो ऐसा ही तत्व पूर्ण हो सकता है। अब ऐसे तत्व को इन्होंने शक्तिमान और शक्ति की धारणा के द्वारा बताने का प्रयास किया है। ये शक्तिमान और शक्ति की धारणा भी यहाँ के शास्त्रों से, मतलब पुराने परंपरा से यहाँ पर आ रही है, जहाँ पर दो ही प्रकार के तत्वों के रूप में सारे संसार, सारे जगत का विश्लेषण कर दिया गया है कि एक ही दो ही तत्व हैं, एक शक्तिमान है और दूसरा शक्ति। परतत्व एक पूर्ण समग्र तत्व है जिसमें सारी संभावनाएं शक्ति के रूप में अंतर्गर्भित हैं। तो वो परतत्व शक्तिमान हो गया और सारी संभावनाएं शक्ति हो गई। इस तरह से दो ही पदार्थ हो गए, शक्तिमान और शक्ति। तांत्रिक परंपरा में
ये जो शक्तिमय चित्तत्व की धारणा है, ये इसका वैशिष्ट्य माना गया है। क्यों? क्योंकि शक्ति की धारणा ही अभेद से भेद की ओर आने का उपकरण है और भेद से अभेद की ओर जाने का भी माध्यम है। इसी के कारण, इस शक्ति के धारणा को स्वीकार करने के कारण ही यहाँ पर संसार भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि संसार से उत्तीर्ण होना। ये दृष्टि ही इसको बाकी औपनिषदिक दर्शनों से भिन्न करती है, क्योंकि औपनिषदिक दर्शनों की धारणा ये है कि हम जो विशुद्ध चित्त के विशुद्ध रूप की प्राप्ति तभी संभव है जब हम इस जगत से उत्तीर्ण हो जाएं। लेकिन यहाँ इस जगत को भी उस चित्तत्व के स्वरूप में ही समाहित करके उस पूर्णता की प्राप्ति का मार्ग बताया जाता है। परतत्व कैसे अपने को बांटता है? कहते सबसे पहले वो अपने को दो रूपों में बांटता है, शिव और शक्ति। अब ये शिव और शक्ति की शब्दावली के बाहर भी अगर हम निकलें तो हमारी चेतना क्या करती है? सबसे पहले अपने एक प्रश्न करने वाली चेतना, एक उत्तर देने वाली चेतना। एक प्रश्न करने वाली जो प्रश्न करता है वो हो गया जो भी, जैसे शैव तंत्र है तो वो कहेंगे कि प्रश्न कर रही है देवी और उत्तर दे रहा है शिव, और शक्ति तंत्र है तो कहेंगे शक्ति उत्तर दे रही है और शिव जो है उसको उस प्रश्न कर रहे हैं। तो ये अपने अपने जो निष्ठाओं के कारण इसमें भेद हो जाते हैं, लेकिन जो चेतना अपने को दो रूपों में बांटती है। इसी को इन्होंने कहा पहले शिव अपने को परम सत अपने को दो रूपों में बांटता है, शिव और शक्ति। फिर शक्ति अपने को नाना रूपों में बांटती है, तो इसलिए वो नाना रूप शक्ति के माध्यम से ही अभिव्यक्त भी होते हैं और उन नाना रूप शक्ति के माध्यम से ही शिव में जाके सिमट भी जाते हैं। तो ये नाना रूप भी सब देखिए चेतना के धरातल पर घटित हो रहे हैं, विचार रूप हैं, आभास रूप हैं। तो ये सारा की सारा जगत उसी चेतना से बाहर आ रहा है और उसी चेतना के अंदर जाके सिमट रहा है। अब इस शक्ति को परतत्व का जो स्वरूपाधायक तत्व बना दिया, इससे क्या हुआ कि ये ऑल इंक्लूसिव फिलॉसफी, मतलब सर्वानुस्यूति मूलक ये चिंतन बन गया कि सब कुछ एक ही तत्व में सिमटा हुआ है। एक ही तत्व सर्वोत्तीर्ण भी हो सकता है और सर्वमय भी हो सकता है। तो अब ये जो शक्ति है ये इस तरह से दोनों काम कर रही है, आत्म निषेध भी कर रही है और आत्म लाभ भी करा रही है। अपने स्वरूप का निषेध करती है, पूर्णता का निषेध करने में भी शक्ति कारण बनती है, और शक्ति ही उस अपूर्णता का निवारण करके आत्म लाभ की प्राप्ति, आत्म स्वरूप की जो पूर्ण स्वरूप है उसकी प्राप्ति भी कराती है। तो ये सारा की सारा जो चिंतन है त्रिक परंपरा में वो शक्ति केंद्रित है। शक्ति का जो शक्ति क्या है? जो ऊर्जा का तरल भाव, जो जो उसमें आश्यानी भाव आता जाएगा, स्थूलता आती जाएगी, उसके स्वरूप में नए नए रूपों को गढ़ने की सामर्थ्य कम होती जाएगी। और फिर जब वो इतना जा करके स्थूल हो जाते हैं, स्थूलता इतनी बढ़ जाती है कि फिर नए रूपों का ग्रहण संभव नहीं होता, तो वो स्थिति जो है वहां पर वो आगे भाषण रुक जाता है। तो इस तरह से ये जो एक ही शक्ति के आश्यानी भाव माने जमना, जैसे ईख का रस जमते जमते गुड़ बन जाता है और फिर उस गुड़ को आप पिघलाइए तो फिर से वो रस बन जाएगा। उसी तरह चेतना का जो द्रवी भाव है जो जमते जमते वो पृथ्वी तत्व तक पहुंचता है, बीच में जो जमने के जो आश्यानी भाव का जो क्रमिक विकास हो रहा है उसी से 36 तत्वों का विकास होगा और फिर से वो जो जमाव है जब वो घटता जाएगा, घुलता जाएगा, तो फिर से वो सारे तत्व आकर के उसी चेतना के से एक रूप हो जाएंगे, शक्ति रूप होकर के चेतना से एक रूप हो जाएंगे। तो इस तरह से ये सारी ये जो शक्ति की धारणा है, इसके माध्यम से वो इस पूरे जागतिक विकास की प्रक्रिया को उसी शक्तिमान में समाहृत माने समेटने का काम करते हैं। शक्ति गतिशीलता की वाचक धारणा और परम तत्व में गतिशीलता, जो त्रिक परंपरा का पर तत्व है उसमें गतिशीलता उसका स्वभाव है। इसीलिए शिव और शक्ति का संघट्ट, शिव और शक्ति को कभी अलग नहीं किया जा सकता, वो अभिन्न भाव से ही सदा स्थित रहते हैं। शिव सुप्रीम एजेंट है, परम करता है,
तो सारा जो अब उसका कर्ता भाव क्या है, ये सारी शक्तियां ही उसका कर्ता भाव है। वो कभी शक्तियों को फैलाता है, कभी समेटता है, उसमें दोनों प्रकार की शक्तियां हैं। अब गति को रोकने की भी शक्ति है, गति को फैलाने की भी शक्ति है। तो इस तरह इस शक्ति के माध्यम से, शक्ति और शक्तिमान की धारणा के माध्यम से वो इस पूर्णता के सिद्धांत की स्थापना करते हैं। अब हम तीसरा क्षेत्र लेते हैं, तीसरा संदर्भ लेते हैं, वो है जगत मीमांसा का संदर्भ। जगत के विकास की प्रक्रिया को वो कैसे समझाते हुए इस पूर्णता के सिद्धांत की स्थापना करते हैं, क्योंकि पूर्णता का सिद्धांत उनके चिंतन से कभी भी नहीं हटता। वो यहाँ पर इसके लिए दो धारणाओं की सहायता लेते हैं, स्पंद और आभास, और इसके द्वारा वो जागतिक विकास को समझाते हैं। तो उस जो परतत्व की गतिशीलता है वो जो है उसको यहाँ पर स्पंद शब्द से कहा गया है। स्पंद के दो छोर हैं, प्रसार और संकोच, उन्मेष और निमेष। और ये जो अन्य दार्शनिक मीमांसाओं में एक जो विशुद्ध चित्त और परिणामी तत्व दोनों को अलग अलग रखा गया है कि उनके हिसाब से अगर विशुद्ध चित्त ये संसार से जुड़ेगा तो उसके विकार उसमें आ जाएंगे, इसलिए वो दोनों को अलग अलग रखते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसे ये पूर्णतावादी चिंतन है, इसलिए इन दोनों को अलग नहीं रखा गया। कूटस्थ नित्य जो तत्व है उसको यहाँ पर शिव के रूप में ले आए, और जो नित्य परिणामी तत्व हैं दूसरे दार्शनिक मीमांसाओं में जैसे प्रकृति सांख्य की उस तरह का तत्व, उसको इन्होंने शक्ति, वही नित्य परिणामिता का कॉन्सेप्ट इन्होंने शक्ति के रूप में ले लिया है, और शिव और शक्ति के समग्र को यहाँ पर परम शिव या परम सत्य, परम चैतन्य की कल्पना के रूप में प्रस्तुत किया है। तो कूटस्थ नित्य और नित्य परिणामिता की धारणाएं यहाँ पर परम सत्य के स्वरूप का अभिन्न अंग बनाकर प्रस्तुत की गई हैं। यहाँ पूर्णता का साधक तर्क है कि उन्मेष होकर प्रसार और निमेष होकर स्थिति। इसका मतलब क्या हुआ कि शिव से शक्ति का अलग होकर भाषित होना, यही है उन्मेष, और इसी का प्रसार होता है 36 तत्वों के रूप में। और जब शिव अंश में शक्ति अंश का फिर से अवस्थापन होता है तो उस शक्ति अंश के माध्यम से 36 तत्वों की स्थिति पुनः शिव तत्व में स्थापित हो जाती है। यही है उन्मेष होकर प्रसार और निमेष होकर स्थिति। तो जो ऐसा पूर्ण तत्व है सारा वैचित्र उसी से भाषित होगा। तो इस तरह जो स्वात्म रूप शिव है उसी का जगत में जब अवरोहण हो रहा है तो सृष्टि की स्थिति है, और जब उसका फिर से ऊर्ध्वारोहण होता है, पहले वो नीचे उतरता है फिर ऊपर चढ़ता है, तो फिर से वो अपने पूर्ण स्वरूप तक पहुंच जाता है और सारा संसार उसी में सिमट जाता है। अब इसी संदर्भ में यहाँ एक और धारणा जो ली गई है वो है आभास की, क्योंकि ये तो परम सत्य 36 तत्वों के भाषण की प्रक्रिया थी। अब उसके बाद जो ये नाना प्रकार का वैचित्र भाषित हो रहा है वो कहाँ से, कैसे, किस प्रकार से भाषित हो रहा है, तो कहते हैं ये आभास की प्रक्रिया है। तो जो भी चेतना में प्रतिबिंबित हो रहा है वो है आभास। चेतना में स्वयं में प्रतिबिंब, ये आभासन या प्रतिबिंबन चेतना में निरंतर घटित होता रहता है। जब एक आभास आभासित होता है तो अन्यों का अनाभासन होता है। एक आभास भाषित होगा तो अन्य अनाभासित रहेंगे। इसी दृष्टि में अब जब वो एक आभास आभासित हुआ तो केवल वो एक सामान्य आभास है, उसके लिए केवल एक शब्द दे दिया है विमर्श में, लेकिन अभी उसका कोई विशिष्ट स्वरूप वहां पर भाषित नहीं हुआ है। अब उसके साथ एक काल का आभास जुड़ेगा। काल माने समय की बहुत सी इकाइयां हो सकती हैं, तो समय का एक आभास उसके साथ जुड़ेगा, तब वो विशिष्ट आभास बन जाएगा। अब उसके साथ फिर देश का आभास भी जुड़ जाए, किसी स्थान विशेष से जोड़ दें उसको, तो अब वो थोड़ा और उसमें इस आकार में स्फुटता आ गई। फिर उसमें और नाना प्रकार के आभासों का जो संयोजन होता जाता है, लेकिन उसके लिए शर्त है कि समान जातीय
आभास से जुड़ेंगे, विरोधी आभास उसके साथ नहीं जुड़ेंगे। और इस तरह से वो एक नए नए पदार्थों की संरचना चेतना के द्वारा की जाती है। तो ये आभास वैचित्र्यों के माध्यम से नाना वस्तुओं का यहाँ पर निर्माण होगा। लेकिन अब ये चेतना का ये निर्माण कैसे करती है? कहते हैं अपनी रुचि के अनुसार, अपने ज्ञान के अनुसार और अपने प्रयोजन के अनुसार। जैसा जिसका प्रयोजन होगा वैसा वो वस्तु का वैसे वो आभासों का संयोजन करके वैसा ही उस वस्तु को का ग्रहण करेगी। जैसे एक ही व्यक्ति किसी के लिए अच्छा है, एक ही व्यक्ति दूसरे के लिए बुरा है, तो एक ही के संदर्भ में उसने अच्छे सज्जनता के आभास को, जो भी उसके लिए अच्छे का कॉन्सेप्ट है, उसके आभासों को जोड़ा तो वो अच्छे के रूप में उसको देख रहा है। जिसकी दृष्टि में वो बुरा है, उसने वो उस तरह के आभासों को उसके साथ जोड़ा तो वो उसको बुरा देख रहा है। तो ये सब कुछ कहाँ हो रहा है? चेतना के अंदर हो रहा है, चेतना के बाहर कुछ नहीं है। जो भी विषय यहाँ भाषित होते हैं चेतना के अंदर ही भाषित होते हैं, चेतना के बाहर कुछ नहीं होता। यही बात यहाँ पर बताई गई है और इस तरह से जगत मीमांसा को समझाने की कोशिश की गई और जगत मीमांसा के माध्यम से भी इसी पूर्णता के सिद्धांत की स्थापना की गई। अब हम लेते हैं ज्ञान मीमांसा का संदर्भ। ज्ञान की प्रक्रिया को जब हम यहाँ पर देखते हैं तो हमें पता लगता है यहाँ की जो ज्ञान की प्रक्रिया है वो अन्य दार्शनिक मीमांसाओं की ज्ञान की प्रक्रिया से भिन्न है। अन्यत्र क्या है? ये ज्ञान की प्रक्रिया अध्यवसायात्मक है। अध्यवसायात्मक का मतलब क्या है कि उसमें निश्चयन होता है, निश्चय वस्तु का निश्चय किया जाता है। और निश्चय कैसे किया जाएगा? तद और अतद का व्यवच्छेदन करके। जो उस जैसा है वो सब तद हो गया, जो उस जैसा नहीं है वो अतद हो गया। उस सबको हटा करके उसके स्वरूप का जो निर्धारण करते हैं, वस्तु के स्वरूप का निर्धारण करते हैं, इसको कहते हैं अध्यवसाय। लेकिन यहाँ का जो चिंतन है, त्रिक चिंतन, इसका जो ज्ञान की प्रक्रिया है, इसमें अध्यवसाय नहीं होता। यहाँ पर क्या होता है? प्रत्यभिज्ञान होता है। ये ज्ञान की प्रक्रिया प्रत्यभिज्ञानात्मक है। ये ज्ञान की आधारभूत संरचना में निहित है। अब प्रत्यभिज्ञानात्मक का अभिप्राय क्या है? जो भाषित हो रहा है, जो हमारे सामने वस्तु उपस्थित है वो, और जो हमारे अनुभव में, हमारे जो पुराने अनुभव हैं, जो हमारे अंदर संस्कार और स्मृति के रूप में विद्यमान है, हमारे पुराने अनुभव, उन दोनों को हम एकीकरण करते हैं और इस तरह से वस्तु के विशेष स्वरूप का निर्धारण करते हैं। हमें कोई व्यक्ति दिखा, हमने उसको देखते ही हमने देख तो लिया, लेकिन हम पहले समझे नहीं। धीरे धीरे हमारे पुराने जो अनुभव उससे जुड़े हुए हैं एक एक करके जागृत होते गए और हम वो सारा ज्ञान उसके साथ जोड़ते गए और अंत में हमने उसके स्वरूप को पहचान लिया। और जब हमने पूरी तरह उसको समझ लिया, हमने उसको पहचान लिया, तो फिर हमारा मन आश्वस्त हो गया और वो विचार हमारी चेतना में लुप्त हो गया, हमारे दूसरे विचारों में हम संलग्न हो गए। तो यही है प्रत्यभिज्ञान। ये ज्ञान की प्रक्रिया का आधारभूत सिद्धांत है यहाँ की त्रिक, यहाँ के चिंतन में। तो ये इसी को यहाँ कहते हैं कि ज्ञान की प्रक्रिया के द्वारा वस्तु के विशेष स्वरूप का निर्धारण होता है। अब जब हम विषय के स्वरूप को अच्छी तरह समझ लेते हैं तो हमारी मानसिक व्यग्रता शांत हो जाती है और हम आत्मसंतुष्टि की अवस्था का अनुभव करते हैं। ये जो आत्मसंतुष्टि की अवस्था है, इसी को यहाँ पर हृदयंगमन व्यापार कहते हैं। यही पूर्णता की अनुभूति है और ज्ञान की प्रत्येक प्रक्रिया में ये पूर्णता की अनुभूति विद्यमान है। हमारे सारे अनुभव, सारे प्रमाण व्यापार इसी प्रकार की आत्मविश्रांति का अनुभव हमें कराते हैं, इसी अवस्था की प्राप्ति कराते हैं। इस तरह इस ज्ञान मीमांसा के संदर्भ में भी हम देखते हैं कि इसी पूर्णतावादी चिंतन का ही परिपोषण किया गया है। अब हम आते हैं मोक्ष मीमांसा का संदर्भ में। यहाँ पर मोक्ष कुछ छोड़ना नहीं है, त्यागना नहीं है, बल्कि ग्रहण है, प्राप्ति है, स्वात्म रूप का लाभ है, अपूर्ण को पूर्ण बनाना है। तो अपूर्ण को पूर्ण कैसे प्राप्त बनाएंगे? जब हम अपने खोई हुई सामर्थ्य को पहचानें। जो कुछ हमारे पास था हमने खुद अपने ही द्वारा अपने ऊपर आवरणों को ओढ़ लिया संकोच के, और इसलिए हम अपनी सामर्थ्यों को भूल गए।
तो अब फिर से उन सामर्थ्यों को पहचान लेंगे तो फिर से हम पूर्ण हो जाएंगे। यही है मोक्ष। अब ये जब अपनी सामर्थ्यों को पहचान लेना, यही आनंद का स्रोत है। तब हम आनंद से युक्त हो जाएंगे। तो इसीलिए आचार्य उत्पल ने लगातार शक्त्याविष्करण के लिए ही प्रयास किया है। और आचार्य अभिनवगुप्त जब विमर्शनी और विवृत विमर्शनी टीकाएं लिखते हैं तो इसी शक्त्याविष्करण की प्रक्रिया को अच्छी तरह समझाते हैं। मनुष्य अपनी पूर्णता को भूल जाता है और अपने द्वारा ही उत्पन्न किए हुए बंधनों में अपने को बांध लेता है, और तभी वो नाना कष्टों का भागी बनता है। अपना पराया ये सब उसने अपने मन से कल्पनाओं को बांधा हुआ है। चेतना तो स्वतंत्र है, चेतना तो किसी बंधन में बंधी नहीं है, लेकिन उसने स्वयं अपने को बंधनों में बांधा है। तो अब उन बंधनों से, कष्टों से मुक्ति कैसे मिलेगी? जब वो अपनी पूर्णता को पहचाने, और जब वो अपनी पूर्णता को पहचान लेगा तो उसका स्वातंत्र्य फिर से स्पंदित हो जाएगा और उसका मन आह्लादित होकर फिर हो जाएगा, जिससे वो फिर से स्वस्थ हो जाएगा। इसी धारणा को लेकर यहाँ पर आचार्य अभिनवगुप्त कई लोक में, इस संसार में जो आनंदवादी, जो आनंद प्राप्ति की स्थितियां प्राप्त हो रही हैं, उनको लेकर के भी इसको समझाने का प्रयास करते हैं, इसी पूर्णता के प्राप्ति के अवस्था को। जैसे कि हम कोई नाटक देख रहे हैं, संगीत सुन रहे हैं, कोई भी कला का आस्वादन कर रहे हैं, या कोई खेल देख रहे हैं, मल्ल युद्ध देख रहे हैं या क्रिकेट का खेल देख रहे हैं, तो उस समय, जिस समय हम उस तन्मयता की अवस्था में पहुंचते हैं कि हम देश काल और व्यक्ति के गत जो सीमाएं हैं उनसे बाहर निकल आते हैं, अपने आप को भूल जाते हैं, वही क्षण जो हमारे आत्म लाभ की प्राप्ति का क्षण होता है। उस समय हम बिल्कुल भूल जाते हैं हम कहाँ बैठे हैं, क्या देख रहे हैं, हमारे पास कौन बैठा है, हम क्या हैं। हम केवल उसी दृश्य में, उसी के अंदर जो भी हम देख रहे हैं उसी के अंदर हमारी चेतना एकाकार हो जाती है। तो यही आत्म लाभ का क्षण है। वो बहुत थोड़ी देर के लिए होता है, लेकिन कुछ देर के लिए ही जो हमारी सीमित स्वत्व का विगलन होता है, तो उसको ही वो हमारी पूर्णता का प्रत्यभिज्ञान है। उसी को स्थायी बनाना है, अपने सत्व को विगलित करके उस पूर्ण तत्व को पहचानना है। ये जो स्वात्म प्रत्यभिज्ञान की प्रक्रिया है, इसका फल है समावेश की प्राप्ति। अब समावेश क्या चीज है? समावेश का मतलब होता है सम्यक आवेश। सम्यक आवेश का मतलब है कि जो व्यक्ति चेतना है और जो पूर्ण चेतना है, ये दोनों मिलकर एकाकार हो जाएं। एकाकार होंगी तो व्यक्ति चेतना पूर्ण चेतना में मिल जाएगी, पूर्ण चेतना व्यक्ति चेतना में मिल जाएगी, कहीं कोई भेद नहीं होगा। तो ये स्थिति समावेश की स्थिति है। तो इस समावेश के प्राप्त हो जाने पर पूर्ण स्वरूप की प्राप्ति हो जाती है। तो इस तरह हम देखते हैं कि अभिनवगुप्त का जो चिंतन है, उसके केंद्र में लगातार यही पूर्णता की धारणा बनी हुई है, और इसी का परिपोषण करने का वो निरंतर प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि वो तांत्रिक संस्कृति के पुरोधा आचार्य हैं, और वो तांत्रिक परंपरा हमेशा इसी पूर्णतावादी दृष्टि का परिपोषण करती है। कुछ भी स्वीकार, निषेध किसी चीज का यहाँ नहीं है, सब कुछ स्वीकार करके ही यहाँ पर चलते हैं। तो इसीलिए वो इसी पूर्णतावादी संस्कृति का परिपोषण लगातार करते हुए दिखाई देते हैं। हमने यहाँ पर कुछ ही संदर्भों को लिया है, इसके अलावा भी कई संदर्भ हैं जिनमें आचार्य अभिनवगुप्त इस पूर्णतावादी दृष्टि का परिपोषण करते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर समय की सीमाओं के कारण उनका स्पर्श नहीं किया है। तो इसलिए अब मैं अपनी बात को यहाँ पर विराम देती हूँ, और आप सब लोगों ने अपना अमूल्य समय दिया, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुनील जी, आप धन्यवाद डॉक्टर मीरा जी को, बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इतनी सरलता से इतने बड़े गूढ़ रहस्य को हम तक पहुंचाने का जो आज कार्य किया है, ये अपने आप में एक सराहनीय है। और जिस प्रकार से आज सब लोग अपना चित्त लगा के सुन रहे थे, मुझे पूरी आशा है कि आज हम लोगों ने कुछ और नई बातें सीखी आज उनसे, मीरा जी से।
तो डॉक्टर मीरा जी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ डॉक्टर हरमोहन मिश्रा जी, सॉरी सुरेंद्र मोहन मिश्रा जी जुड़े। सुरेंद्र जी, क्या आप आज के कार्यक्रम का धन्यवाद प्रस्ताव रखेंगे? डॉक्टर सुरेंद्र मोहन मिश्रा जी। अच्छा, सभी को नमस्कार मेरा। बहुत ही आदरणीय डॉक्टर मीरा रस्तोगी जी ने बहुत ही सुंदर आज उपस्थापना की इस महान शास्त्र की, आचार्य अभिनव गुप्त के संदर्भ में, जिनकी हम जन्म जयंती पालन करने के लिए एक सप्ताह व्यापी कार्यक्रम के साथ में जुड़े हुए हैं। तो मैं किन बातों में कहूँ, जिन 5 संदर्भों को उन्होंने लिया और 5 परिप्रेक्ष्यों में आचार्य अभिनव गुप्त जी को रखा, बहुत ही सरल शब्दावली में और बहुत ही गूढ़ विषय को उन्होंने हमारे सामने स्थापित किया। तत्व मीमांसा को भी रखा, परमार्थ मीमांसा को, ज्ञान मीमांसा, अंत में मोक्ष मीमांसा, और कैसे यहाँ निषेध होते हुए भी आत्मलाभ जो स्थिति है वो किस प्रकार से विशिष्ट स्वरूप को धारण करता है। और बहुत सारी बातें उन्होंने आचार्य उत्पल की बात कही, आचार्य सोमानंद की बात कही, और पूरी परंपरा का और विभूति और विमर्शिनी जो खास करके ज्ञान मीमांसा के शिखर ग्रंथ हैं, तो उनको भी उन्होंने उद्धृत किया। क्योंकि जो अद्वैत शैवागम है काश्मीर का, अथवा काश्मीर शिवाद्वयवाद, उस शिवाद्वयवाद को जो दार्शनिक जगत है उससे, उसके साथ मिला करके और उससे पृथक करके देखने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। जब प्रस्थान भेदों की बात होती है तब सभी दर्शनों के साथ में प्राच्य और पाश्चात्य 2 प्रकार के दर्शन हैं, विशेषतः जो द्वैतवाद एवं अद्वैतवाद की भूमि पर प्रायः खड़े हुए नजर आते हैं, डुअलिज्म एंड नॉन डुअलिज्म। और उन सबके संदर्भ में अगर अद्वैत सेवागम को जो त्रिका दर्शन है उसको हम रखें तो कहीं एक विशिष्ट दर्शन उभर करके आता है, एक विशेष जागतिक दृष्टि उभर के आता है, जिसको हम जो है डॉक्ट्राइन ऑफ रिकॉग्निशन या डॉक्ट्राइन ऑफ रिफ्लेक्शन के नाम से जानते हैं। और बहुत सुंदर रूप से उन्होंने प्रतिबिंबवाद, आभासवाद और किस प्रकार से उन्होंने स्वच्छता और स्वच्छंदता की व्याख्या की, और जो परम शिव तत्व है जो इमानेंट भी है साथ साथ ट्रांसेंडेंट भी है, इसी बात को समझाने के लिए हाँ कहीं वेदांत तक जितनी दर्शनों की त्रुटियां हैं उनमें कहीं कहीं कुछ तार्किक कौतूहल अवशिष्ट रह गया था। उस तार्किक कौतूहल को संपूर्ण करने के लिए जो सही जो है आचार्य अभिनव गुप्त को जाता है। तो इसकी कोई बात नहीं कि प्रत्यभिज्ञा को एक दर्शन के रूप में स्थापित करना और प्रमाण मीमांसा को स्थापित करना और उसकी कसौटी पर जो है संपूर्ण शास्त्र को प्रतिपादित करना, 4 प्रकार की वाणियों के भेदों को स्थापित करना और परावाणी की समता को, तादात्म्य को शिव तत्व के रूप में शामिल करना और सभी तंत्रों की विशिष्ट तत्वों की व्याख्या लिखना और स्वयं भी जो उनका तंत्रालोक है तो उसको जिस प्रकार उन्होंने वहां पर रखा और मोक्ष शास्त्र को भी औरों से जो तुलित किया, वो तुलना आज भी और शैक्षणिक एकेडमिक रिसर्च की आवश्यकता मांगता है। साधना के पक्ष में भी और शोध और गहराई से अनुभव की मांग रखता है कि कैसे जो है अलग अलग स्थितियों में जो 7 तरह के प्रमाता है उनसे श्रेष्ठ जो है शिव प्रमाता है, तो शिव प्रमातृत्व पर्यंत पूर्ण अहंता के परामर्श पर्यंत कैसे मोक्ष का दौड़ है। और मोक्ष के नाम से एक ही तरह का मोक्ष नहीं जो सामान्यतः लोगों पर प्रचलित है, एक ही परम देव है, एक ही मोक्ष है, वह तो ऐसे कहने के लिए सही है, परंतु आचार्य अभिनव गुप्त तंत्रालोक में बड़े विभाग ढंग से उसको प्रस्थापित करते हैं कि किस प्रकार यह जो मोक्ष है वह श्रेष्ठ मोक्ष है। और आचार्य डॉक्टर जो है मीरा रस्तोगी जी, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। उनके गुरुजी जो मेरे भी गुरुकल्प हैं प्रोफेसर नवजीवन रस्तोगी जी, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। और सभी महानुभाव जो यहाँ पर उपस्थित थे उन सबको मैं प्रणाम करता हूँ कि आचार्य अभिनव गुप्त की जो मनीषा है, इस मनीषा को बहुत गहन रूप से अध्ययन करना
और जितने एसोटेरिक सिस्टम्स हैं पूरे वर्ल्ड ओवर, उन सब के साथ में मिस्टिक सिस्टम्स हैं, उनके साथ उसको तुलित करके उनकी जो प्रतिभा है उसको सामने लाने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। और प्रतिभा शब्द जिसको उन्होंने एक नया रूप दिया, वही बात सोमानंद से चल करके और किन्हीं वैदिक संदर्भों से चल करके, जहाँ पर बाघ सूत्र का संदर्भ है वहाँ भी प्रतिभा शब्द तो नहीं आता, परंतु जो है वहाँ प्रतिभा की बात होती है, उसको प्रातिभा करके भी कहा गया है। उसको हेलाराज पुण्यराज आदि ने भी, भर्तृहरि ने भी उस तत्व को देखा, और वह जो प्रतिभा है, वो जो चमत्कार है, उसी प्रतिभा के बल पर जो है पूर्णाहंता की जो प्राप्ति हो जाती है। आचार्य रामेश्वर झा जी थे, उन्होंने पूर्णता प्रत्यभिज्ञा नामक जो है इसी विषय का शास्त्रीय काव्य की रचना की। उस पूर्णता प्रत्यभिज्ञा जहाँ लक्ष्य है, उस पूर्णता प्रत्यभिज्ञा के सामने विश्व के सभी दर्शनों के जो मोक्ष संप्रत्यय है वह वामन नजर आता है। तो इन्हीं कुछ शब्दों के साथ में मैं आज के ये जो हमारी वक्त्री हैं आचार्य मीरा रस्तोगी जी, उनका मैं धन्यवाद समर्पित करता हूँ। सभी लोगों को, आयोजकों को मैं प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद डॉक्टर सुरेंद्र मोहन मिश्रा जी। आपके इन वचनों से हमारे को और भी मतलब आप जब भी वह कहते कुछ न कुछ वचन रखते हैं और इस सारी गोष्ठी को अपने वाक्यों में समाते हैं तो हम लोगों की ज्ञान में और वृद्धि होती है। तो आज इसी कार्यक्रम के अंत में मैं सुमन्या कश्यप को आमंत्रित करूंगा कि वो अपने कुछ मंत्रों से और इस कार्यक्रम को समाप्त करें। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं, ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं, द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम्, द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम्, एकं नित्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधि साक्षिभूतम्, एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधि साक्षिभूतम्, भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि, भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि, सद्गुरुं तं नमामि, सद्गुरुं तं नमामि। धन्यवाद सुमन्या। अब आप देखिए सुमन्या आसाम से है, आचार्य पूरे भारत के है और लोग दक्षिण भारत से, आसाम से और देश के विभिन्न भागों से जुड़े। यही आचार्य अभिनवगुप्त हम पूरे भारत को जोड़ने का जो कार्य करते हैं, इसी कार्य की श्रृंखला में कल भी हमारे साथ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से कुछ बच्चे जुड़ेंगे जिन्होंने आचार्य अभिनवगुप्त के ऊपर कुछ प्रेजेंटेशंस बनाई हैं। वो कल 6 बजे हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ेंगे और उनके बाद 7 बजे आचार्य स्थानेश्वर तिमल सिन्हा जी जुड़ेंगे जो आचार्य अभिनवगुप्त की अभिव्यक्ति पे प्रकाश डालेंगे। तो आप सबसे अनुरोध है कि कल भी इस कार्यक्रम के साथ जुड़े रहें और इस पूरे श्रृंखला में अपने आप को भी ज्ञान की वृद्धि में रखें और हम भी इस ज्ञान से लाभान्वित हो, यही हमारा हेतु है। इसी के साथ आज के सभी श्रोताओं को जो और आज जूम पे और फेसबुक पे हमारे साथ जुड़े, उनका मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। हमारे साथ जितने आचार्य जुड़े थे उन सबको भी मैं धन्यवाद देता हूँ। और मीरा रस्तोगी जी, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद कि आपने अपनी प्रस्तुति सरलता से रखी, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार। Thank you very much, Sunil ji.